Hi everyone, welcome back to the USCPA classes for Financial Accounting and Reporting. In this video, which is part 2 of Cash and Cash Equivalent, I'll be covering in detail about bank reconciliation, benefit of bank reconciliation, and the method of bank reconciliation. Let's dive into to understand everything about bank reconciliation in cash and cash equivalent topic of US GAAP. Bank reconciliation. Hope you have studied in 11th standard. All of you. Yes, sir. Right. Let's go back to the school days with best of your best teacher of accounting. That's the reason we all are here. Right. Who was your account teacher? हमारे सर कौन थे? संजय सर। यहाँ पे वो सर वो अकाउंट्स पढ़ाते थे और वो क्लास में ऐसा बोलते थे, मैं तेरे को जो टोटका बता रहा हूँ ना, तो ये आजमा दियो, इस तरह कभी गलत ही नहीं होगा। वो अकाउंट से टोटके पे ही चल रही थी। What about you? सर कॉलेज टाइम की मुझे बात याद है। कॉलेज टाइम में मैं पढ़ते थे, हम लोग 3-4 दोस्त थे, तो उनको पता नहीं क्या उनकी शपथ थी, क्या थी, वो पूरे 2 महीने में वो 25-30 क्वेश्चन कराते थे। और उसमें से और वो घुमा फिरा के आप कितना ही उनको कर लोगे, सर कुछ और पढ़ा दो, ये पढ़ा दो, कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ लो ना कि ये बता दो, पता है उनको नहीं आना, तो कहते अरे यार तू क्यों टाइम वेस्ट कर रहा है, इससे बंद कर, जो मैं कह रहा हूँ वो कर लियो, एक हफ्ते पहले आ रही। ऐसा कुछ सीपीए में भी कोई जुगाड़ है? सॉरी, ऐसे सीपीए निकालने का भी कोई सिस्टम है ऐसा कुछ? एमसीक्यू करो। MCQs are only जुगाड़। वो तो 2000 क्वेश्चन है। Yeah, just multiply by 100. वही ना। So बैंक रिकंसिलिएशन, तो जैसे मैं भी अब ईआरएस में काम कर रहा हूँ, एंटरप्राइज सर्विसेज में, तो मैं उस पे करता हूँ ICFR पे, इंटरनल कंट्रोल्स ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड इंटरनल ऑडिट्स करता हूँ। तो बैंक रिको तो जो कोई भी एंटिटी उठा लो, तो बैंक रिकंसिलिएशन का अभी भी ट्रेजरी का हम लोग वॉक थ्रू कर देते हैं, तो हम अंडरस्टैंड कर रहे थे कि बैंक रिकंसिलिएशन एक्चुअल में कौन परफॉर्म करता है ट्रेजरी टीम। फिर ट्रेजरी टीम मैनेजर उसको रिव्यू कर रही है, नहीं कर रही, रिव्यू कर रही है तो वो क्या प्रोसीजर्स कर रही है, उसको कैसे रिटेन कर रही है एविडेंसेस को, और वो फिर कैसे फ्लो होता है। कई कंपनी चेकलिस्ट तक मेंटेन करती हैं, हर रिव्यू भी होगा एंड देन एक अगेंस्ट उसकी चेकलिस्ट होगी जिसके अंदर वो अपना साइन ऑफ डालेंगे कि हमने इस बैंक रिको कर लिया है। तो दिस कंट्रोल इज लाइक नहीं होगा तो हम डिजाइन फेल करते हैं प्रोसेस का। Yeah, it's a very critical control, undoubtedly, from both perspective, internal audit perspective as well as stat audit perspective, or you can say group reporting perspective. Yeah, this is one of the critical, you can say, control. So what generally comes in bank reconciliations? वो पढ़ते थे ना, बैंक चेक नॉट डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड। हम लोग अपने हमने शो कर लिया बट बैंक में अभी वो क्रेडिट नहीं होगा, तो वो डिफरेंस होगा। गुरमेहर वो तो पॉसिबल नहीं है, चेक नॉट डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड। नहीं सॉरी, मैं गलत बोल गया, हमने डिपॉजिट कर दिया बट हाँ तो ठीक है ना, डिपॉजिट किया बट क्रेडिट नहीं हुआ ना, और मैंने अपने में उसको क्रेडिट किया। What you said? मैंने उल्टा बोला। चेक नॉट डिपॉजिटेड बट क्रेडिटेड, उल्टा बोल गया मैं। और बैंक चार्ज होता था, सबसे क्लासिक एग्जांपल बैंक चार्जेस, क्योंकि बैंक तो कर ही लेगा और हमारे बुक्स में वो हम लोग उसको इंक्लूड नहीं करते, वो रिकंसाइलिंग आइटम होती थी। What else? मैं तो मुझे थोड़ा आप वो दे सकते हो रिलैक्सेशन, मुझे 2:15 बज रहे हैं ना, तो मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर सकता हूँ। Yes. What else? आयुष, आकर्ष, तो कंफ्यूज रहता था कि वो आंसर में स्टार्ट कहाँ से करना है, बैंक बैलेंस से स्टार्ट करना है या कैश बैलेंस से स्टार्ट करना है, वो आइटम्स ही बदल जाते थे रिकंसिलिएशन के। Yeah, so this is like one of the question you can definitely expect in your exam.
either the bank reconciliation or account receivable reconciliation or account payable reconciliation. One reconciliation will definitely coming in your exam. अच्छा, ये सर अकाउंट तो कभी करी नहीं मैंने। No, we'll be तो इन studying फॉर्म ऑफ today. सिमुलेशन आप बोल रहे हो रिकंसिलिएशन आएगी, Sorry. इन फॉर्म ऑफ सिमुलेशन आएगी। Yes, task-based simulation. Yes. ओके, So, पूरा कुछ what else comes in bank reconciliation? सर बाकी तो बैंक चार्जेस हो गए, हो गया वही ये पोस्ट डेट, ये पोस्ट डेटेड चेक्स पोस्ट हो डेटेड गए। चेक्स है जिसकी एंट्री हमने तो अपने लेजर में कर ली बेसिकली बैंक बुक में, बट तो जब रियलाइज होगा बैंक में तभी होगा। उस टाइम क्रेडिट हुआ, हम पहले ही क्रेडिट दिखा देते हैं उसको बैंक। बाकी कैश इन ट्रांजिट हो सकता है। कैश इन ट्रांजिट तो क्या ही होता What है, is होता है। cash in transit? अरे वो एक 12th में आता था, टीएस ग्रेवाल में, उसमें ये होता था कि कस्टमर ने कैश भेज दिया, आपके पास पहुंचा नहीं है अभी। वो ट्रक पे आ रहा driver is coming with cash. वो सर वही हो गया, सर सैमसंग ने एप्पल को पे करा था ना कॉइन्स में ट्रक से भर के। वो क्लासिक एग्जांपल हो गया होगा इनके लिए। बट इसके वैसे एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर भी हम करते हैं जैसे आरटीजीएस या कोई हो गई, तो हाँ। उसमें भी लैग आ जाता है। तो आज हमने ट्रांसफर किया और वो मंथ एंड था या क्लोजिंग थी, तो वो हुआ फर्स्ट को क्रेडिट बैंक में, बट मैंने अपने बुक्स में 30th को ही दिखा लिया, या बीच में पब्लिक हॉलीडे आ गई या कुछ आ गया। एरर्स होती है, ह्यूमन एरर भी हो गई कि मैंने, मेरे अकाउंटेंट ने सही से अकाउंट नहीं किया, तो एरर्स भी हम लोग रिकंसाइलिंग आइटम बन जाती है। राइट। मतलब डेबिट क्रेडिट गलत भी अगर कर दिया है अमाउंट तो मे बी वो भी एक रिकंसिलिएशन है। हाँ जी। Yeah, so let's understand in more structured way. Okay, so bank reconciliation, it is the process by which bank account balance in an entity books of accounts is reconciled with the balance reported in the financial institute, or you can say bank, in the most recent bank statement. Any difference between these two figures used to be examined and rectified if needed. This is one of the widely used control procedure. So here, like you'll be starting with the book balance and reaching to the bank balance, or starting with the bank balance reaching to the book balance, to understand what are the differences and the reason for those differences. So this is like simple, you can say straightforward bank reconciliation you have done, might have done in your school days or college day. But there's one more kind of bank reconciliation which you might have not studied in your school days or college day. That also will be studying over here. But the whole objective of doing a bank reconciliation is to identify if there is any error in the recording of bank book of the entity with the bank balances as per bank statement, or identifying the need of any adjustment in the cash account, right? So these are the main objective why we do the bank reconciliation. And generally how we do the bank reconciliation, starting from book balance to the bank balance, right? So there are 4 category of difference that can be possible between the bank balances and the book balances. First one is error, right? So bank error, wrong bank charges debited by the bank or wrong interest is deposited by the bank. So that can be like error from the bank side. Second is time log difference in the bank account. That means check you have deposited, but it is not yet presented or cleared in the bank account. What does it mean? Check deposited but not cleared? सर डिपॉजिट हो गया उनके, बट जो पूरा प्रोसेस होता है बैंक का कि डे एंड पे क्लियरिंग करते हैं, उसके बाद दे क्रेडिटेड इनटू योर अकाउंट, तो वो अभी क्लियरिंग तो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है अमाउंट। Yeah, one question before we move forward. When do we do bank reconciliation? सर मंथ एंड पे करते हैं, मंथ एंड जो हो जाता है। Yeah, month end, quarter end, year end, period end, right? So you have to do the करके, sorry, कोई भी कट ऑफ डेट डिसाइड करके दे कैन डू। Yeah, but ideally it's generally happen on month end, quarter end, year end, or any period end for which they need to make a financial statement. Okay. Third one is book error. So first one was bank error. Now third one is book error. That means we have made certain error in the books of account. That may be
customer directly deposited it in the bank account, but we are not aware of it, right? Second could be typo error in recording the amount. Instead of $100,000, we have recorded $10,000, right? So those are error are called book error. Fourth one is time lag difference in the entity book. So second option was time lag in the bank book. Fourth option is time lag in the entity book. That means check issued to the vendor but not presented for the payment. That means you have given a check to any vendor, but that vendor has not presented to the bank yet. Hence, you have reduced your book balances, but bank has not reduced because it has not yet presented to the bank. Make sense? Right, Yes, sir. sir. Right. Another could be interest income directly deposited by the bank charges for the dishonor of check, etc. What are the benefits of bank reconciliation? First, we all are clear what are the category of differences in bank reconciliation. Two category, very simple. If you say one is bank side, where is book side? Bank side, it can be bank error, or second can be time lag. Third, or from the book side, it can be book error or the time lag. Very simple. Any doubts? सर एक चीज है, अगर बैंक साइड पे प्रॉब्लम है तो क्या क्लासिक प्रोसीजर होता है? वी गो बैक टू बैंक to get those rectifications? What type of error it is? For example, if आप they have given a wrong bank charges, then yes, you'll go back and request the bank to correct that, right? If it is just like you can say check which you have deposited, but it reaches to the bank later on and cleared later, so that's a process, right, normal process that they have. got it, So it depends on case to case, right? got it, Ayush, Akush, good. Yes, sir. Yes, Good. sir. So what are the बट benefits of? मैं उस एंगल से सोच रहा था क्योंकि बैंक का जो रिकंसिलिएशन का साइन ऑफ होते हैं वो हम देखते हैं कि नेट बैलेंस हम जीरो निल हो रहा है नहीं हो रहा। अब बैंक चार्जेस के लिए तो फॉलो अप करने पड़ेंगे, तो इफेक्टिवली ऑन मंथ एंड वाली चेकलिस्ट में मैं साइन ऑफ निल करके साइन ऑफ तो नहीं कर सकता, बट मैं रीजन दे सकता हूँ कि वी इन कॉन्वर्सेशन विद बैंक टू गेट दोस चार्जेस रेक्टिफाइड। Yeah, that would be your remarks. राइट, ओके। Right. Now coming to the benefits of bank reconciliation, timely detection and correction of accounting error. So why bank reconciliation is important? So that you can timely detect and correct if there is any accounting error. Second is ensure completeness and accuracy of bank balances. Third is it helps in timely identification of fraudulent transaction. Any example you would like to add how it can help in identifying the fraudulent transaction? फिर कई बार ऐसा होता है कि आपको नहीं पता होता बट आपके अकाउंट से कुछ डेबिट्स हो जाते हैं, जैसे अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ था। तो वो अगर आप बैंक स्टेटमेंट आपने चेक किया तो यू गेट टू नो कि हाँ डिफरेंस है, देन यू आइडेंटिफाई कि डिफरेंस क्यों है, और उसमें चेकिंग करने पता लगा कि ये तो मैंने कहीं ना मैंने डिसबर्समेंट करी ना मैंने इसके लिए कोई अगेंस्ट चेक दिया था। So then you can identify and you can like follow up on those fraudulent activities basically. सर अभी हमारी कंपनी में ना एक फॉरेक्स का फ्रॉड हुआ था। उसमें 1.25 करोड़ का फ्रॉड हुआ था। उसके अंदर इन्होंने क्या करा कि कोई एम्प्लॉय था, वो पहले एक्स एम्प्लॉय था एफसीएम का, वो गया एफसीएम का पूरा नाम वाम लेके हमारे ही क्लाइंट के पास, और उसने प्रॉमिस करा कि मैं फॉरेक्स इशू दूंगा आपको, और उसने कुछ तो ऐसा नंबर बना रखे थे जिसपे कॉल करा होगा, तो दे थॉट कि अच्छा ये तो हमारा रेगुलर सप्लायर है फॉरेक्स का, तो उसने पूरी डील वील करके आया वो, और उसने अपना अकाउंट नंबर वगैरह दे दिया जो कि इस तरीके से बना रखा था एफसीएम का होना चाहिए ऐसा, और उसने कुछ तो उसके पास था आईडी पासवर्ड, कुछ तो मिस हुआ है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। तो उसने क्या करा, डेबिट लग गया हमारे बैंक अकाउंट में, और पेमेंट सीधा उसके पास नहीं गई, उसके बैंक अकाउंट में चली गई हमारे एफसीएम के अकाउंट से, जो बंदा प्रेजेंट कर रहा था वहां पे अपने आप को उस तरीके से।
हम्म तो वो यही कि जब ब्रांच में रिकंसिलेशंस वगैरह हो रहे थे तो हम्म उसमें डिटेल भी आती है ना बैंक अकाउंट में, तो कि हम्म एक्चुअली किस अकाउंट में गया है और उसका क्या हम्म है, फर्दर डिटेल्स। तो हम्म वहां से हमने देखा, हमने कहा यार ये बंदा तो कोई पुराना था और इसके अकाउंट में क्यों गया है, ये हमारा कोई कस्टमर भी नहीं है ऐसा, तो मतलब क्या है हम्म ये। हम्म तब वी वर एबल टू आइडेंटिफाई बैंक रिकंसिलेशन के टाइम पे कि भाई तो कुछ गड़बड़ी चला गया, तो वी हम्म फर्दर टुक दी करेक्टिव एक्शन। हम्म अभी होता है कभी कभी कि बड़ी डिटेल बहुत ज्यादा आती है बैंक स्टेटमेंट्स में, सब कुछ ही मिल जाता है आपको, सो उससे हम्म बहुत आइडिया लग जाता है कि कहाँ कुछ गलत डेबिट हुआ है, किसी के पास चला गया, तो मे बी बड़ा उस पकड़ा गया वैसे वो। वो पकड़ा गया भाई, वो 2 बार कर चुका है फ्रॉड बंदा, अलग अलग। फॉरेक्स में फ्रॉड भी बहुत ज्यादा होते हैं सर, और yes, very फॉरेक्स में तो true. Same way, like for example, if you are in sales and marketing team and you have a very good relation with the customer and you took करेक्ट। the check from the customer in the company name and same company name you have created separately and created a separate bank account, you can just go and deposit, right? That राइट। can be a fraudulent transaction. So the bank reconciliation, that is the reason like bank reconciliation control is a critical control in all the यस। organization, right? So it help in timely detection and correction, but it is not a preventive control. Gurmeer for you. So bank reconciliation is detective control, not a preventive control, right? राइट। So there are two forms of bank reconciliation. One is simple reconciliation, which you all know. Second is for column reconciliation. So this is different, which probably you might have not studied in your school and college. So simple reconciliation method. Bank balance as per bank statement that you take as a starting point, right? Plus and minus bank error, plus and minus time lag difference in the bank account. So then you reach at correct cash account, right? Then other side you'll see balance as per book, that is in your book balance, plus and minus if there is any book error, that means the error from your side. Third is plus and minus of the time lag difference in the entity book, that means check issued but not presented, basically, right? So that will give you the correct cash balance, and A and B should be same. Any doubt? Let's No, try sir. an illustration. Let's try an illustration to digest this. A company year end December 31st, cash balance is $160,000. On the same day, A company had held the following items in its safe. First is $50,000 check payable to A company dated January 5th next year that was not included in year end December 31st checkbook balance. So this is a post dated check, right? Yes, no. Yes, sir. So what is the what you can say No implication, No sir. implication, sir. no implication because the 5,000 check payable to the A account dated 5th January next year not included. So that means it is actually not required to be included, right? Hence no implication. Second is 3,500 check payable to Smith deposited on December 25th and included in 31st December checkbook balance, which was returned for non-sufficient fund. The check was redeposited on January 3 next year and cleared on the January 8th. Does Sir, this ये make add कर देंगे. add We would करेंगे or add this. reduce? Yes. Do we Sir, add or add do we करेंगे. reduce? Yes. Why we need to add, not reduce? Sir, cash balance में 1,60,000 का cash balance है. They are saying that it has already uh, डिपॉजिट कराया ना। and included in December 31st checkbook balance. Mhm. So included से मैं I am assuming it कि it means कि 1,60,000 में already reduced है ये figure. So अब now that on it has been returned back,
तो बैंक बैलेंस तो उतना इफेक्ट नहीं हुआ. वी वुड ऐड दिस बैक टू 1,60,000 कि जो टू कम टू द फिगर दैट इज एक्चुअली इन द बैंक. Okay, we'll hold on and come back to this statement what you said. Next one is $25,000 check payable to the supplier and drawn on Smith account that was dated and recorded December 31st but was not mailed until January 15th next year. ऐड होगा सर, ये तो ऐड बैक हो जाएगा उसी तरीके में. हाँ, ये भी ऐड बैक होगा. Okay, so I think there is some error in the question. होगा. So $5,000 check payable to a company dated 5th January that was not included in the year-end check balance. 3,500 payable to a company deposited December 25th, including December 31st checkbook balance, which was returned for non-sufficient fund. Check was redeposited in this. $25,000 payable to the supplier and drawn on a company account that was dated and recorded on 31st but was not made to the January. Sorry, there was some typo error. So in the point number 2 and point number 3, instead of Smith, it is A company. That's the reason I thought to keep on hold on second point. So second point C is $3,500 check payable to A company. That means for you it is receivable. Dated December 25th and included in 31st December checkbook balance. सर हमारे लिए पेबल है सर. Sorry? ये इसमें जो आपने चेंज भी करा उसके बाद आ रहा है $3,500 चेक पेबल टू ए कंपनी. तो मेरे रिसीवेबल नहीं, पेबल ही हुआ ना सर. वो स्मिथ ही ठीक था मेरे हिसाब से, क्योंकि ए कंपनी तो वी आर हम खुद है ना. Yes. नहीं, पेबल टू सी मतलब टू बी रिसीव्ड बाय अस. So these are the language you should be used to. Yeah, these are the language you should be used to. You know, like you will not come plain vanilla language in exam. हाँ ठीक है, ये ऊपर से ही कोई ए कंपनी को ले लिया है तो रिसीवेबल हो गया. करेक्ट ठीक है. So 3,500 check payable to a company deposited on December 25th and included in December 31st checkbook balance, which was returned because of non-sufficient fund in the customer account. The check was redeposited on 3rd January. That means you need to exclude this, right? Yes, राइट सर. लेस हो गया. Third point is $25,000 check payable to the supplier and drawn on a company. That means a company has issued a check. Drawn means you have issued, right? This is what we studied. You remember in your business law or maybe in your 11th standard when you are studying the promissory note. Yes sir. Drawn. drawing, right? So it's drawn on you. That means you have to pay. Correct. Right? $25,000 check payable to the supplier and drawn on a company account that was dated and recorded 31st December but was not mailed until January 15th. You have not given, so it will be added to your balance, right? So if you see the solution, unadjusted balance at year end $160,000, add check payable to the supplier dated 25th but not mailed until 5th January next year will be added back. Less non-sufficient fund check returned by the bank on December 30th, adjusted in 31st. Adjusted balance is 181,500. Right? So this is an example of bank reconciliation. Now go back and see this again. Formulas. Balance as per bank statement, plus and minus bank error, plus and minus time lag from the bank side. So that will give you a correct bank account. Balance as per the book. Here in this illustration, everything which we have considered is as per the books to reach to the correct balance, right? So balance as per book, plus and minus book error, plus and minus
time lag difference that will give you the correct bank account, or you can say cash balance. Now look at illustration 2. A company books balance is 12,650 as on December 31st, year 2. A company December bank statement report the following amount. Cash balance. So you have book balance of how much? 12,650. Yes. Cash balance means what? Bank account balance, which is 10,050. And you have a bank charges $10. You have non-sufficient fund, dishonored check of $90, and then you have deposit in transit equal to $3,000 and outstanding check that are $500. Determine A December 31st adjusted cash balance. So if you see the bank reconciliation for December, first one you are starting from book, so you will keep only the adjustment from the book side. So this is something you need to keep in mind when you are taking the book balance and making a reconciliation. You will do all the adjustment relating to the book balances. And when you are starting from bank balance, you will be making all the adjustment from the bank side, right? So here, objective of bank reconciliation is to reaching at the true balance. Make sense? Yes, sir. So bank balance as per book is 12,650, right? Minus bank charges, because you are not aware of that bank has charged anything. So you need to book that into your accounting. So I have reduced $10. Second is if there is any check dishonor, that also you need to make adjustment. That means $100 adjustment you'll be making. So your adjusted cash balance, or you can say the true balance, is 12,550, right? Now coming to the other side, bank side. What is the bank balance as per bank? $10,050, right? Next is deposit in transit equal to $3,000. Deposit in transit. What does it mean? That's 3,000. Customer has deposited, but it has not reflected in your bank account. It is already being reduced from the customer account, but it is about to come into your bank account. So you'll be adding that as an in-transit deposit, right? And then you have outstanding check of $500. That means check issued but are not presented for the payment. That $500 you'd be adjusting. So your adjusted cash balance, or you can say true balance, is 12,550. So here, when you are making a bank reconciliation, you need to make sure the true balance from both the sides should be matching. Right? A is always equal to B. Okay. Now let's do a practice question. Mayo Company had a cash balance of 32,300 recorded in its journal ledger at the end of the month. Before receiving its bank statement, reconciliation of bank statement reveals the following information. First is bank charges, bank service charges $15, check deposit and return for insufficient fund 1, 2, 0. Third is deposit recorded in the journal ledger as 258 but should be 285. That means typo error. Fourth is check outstanding $1,800. After reconciling its bank statement, what amount should Mayo report in the cash balance? So you need to identify the true cash balance, right? So first, starting from 32,300, right? Mayo Company had cash balance of 32,300. 300. Recorded in the journal at the end and before receiving the bank statement reconciliation. So in that, first whether you'll be making the adjustment for service charges or not. Yes, sir. Minus 15 हो जाएगा उसमें से. Minus 32,300. 15. Okay. Let me do calculator also. So you have
32300 minus 15, it is 32285, right? Then next Yes. is check deposit and return on account of insufficient fund. So this Plus. you will be adding plus $120. plus 120 or minus 120. सर चेक डिपॉजिट माइनस माइनस होगा. हमने अपने एंड पे डिपॉजिट दिखा दिया था कैश बैलेंस में, बट जो जिस कस्टमर ने मुझे दिया, जिसने भी दिया था कस्टमर ने, उसके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस था तो वो बाउंस हो गया. तो उल्टा है. मुझे ठीक है. ऐसा लग रहा है कैश डिपॉजिटेड बट ओके. इनसफिशिएंट फंड से वो बाउंस हो गया. आई डोंट नो, मतलब इसमें सर कस्टमर का बाउंस हुआ है या हमारा बाउंस हुआ है. हाँ वही मुझे समझ लग गया. रहा है कस्टमर का बाउंस हुआ है. Yes, yes, yes. So check deposited. Which check you will deposit? The check you will be receiving from customer, and it has bounced because of insufficient fund. तो minus So 120. you have already Minus. credited in your bank account, books account. Right now you will be reducing it. Next is deposit in general ledger as 258, but it should be 285. What is the difference? $27. Minus 258 plus 285. माइनस $27 है सर. Minus $27 Plus plus Plus. $27 plus Right. $27. right? Yes. Plus $27. Last one is check outstanding. वो तो आउटस्टैंडिंग ये तो मतलब ये भैया बैंक साइड की एडजस्टमेंट है, तो ये हम नहीं इसको इंक्लूड करेंगे. Hmm? मतलब मैंने डिडक्ट पहले से कर रखा है, वो Hmm. मेरे अकाउंट से डिडक्ट नहीं हुआ, तो ये बैंक के साइड पे ला गया है. Hmm. और हम कैश को एडजस्ट कर रहे हैं, तो हम कैश वाली एडजस्टमेंट से लेंगे, तो इसको नहीं हम हाथ लगाएंगे. Hmm. राइट. Right? So if you go back 1 second and see this. So time lag in the bank account will come from the bank statement side. But as of now, we are calculating the true balance from book side. Right? Hence, this information is not relevant. Make sense? no. Right? So after reconciliation, it's bank statement. What amount should mayor report in the cash balances? 199. Right? Now coming to the any doubt on the plain vanilla bank reconciliation? So far so good. yes sir. Okay, now coming to the 4-column bank reconciliation. The 4-column approach is to reconcile any difference between the amount the depositor has recorded as a cash receipt and the amount bank has recorded as deposit. Likewise, this approach determines the difference between the amount the depositor has recorded as cash reimbursement and the amount bank has recorded it as a check pay. The 4-column reconciliation also refers as reconciliation of cash receipt and disbursement, proof of cash, or proof of proper recording of cash transaction. So just remember these 3 terms. So in the exam, they may ask you the reconciliation of cash receipt and disbursement. One second. Sorry, actually, since last night we do not have power. I'm sitting at like my upper floor, so I'm just open the window. It's like like पर्दे पड़ा रहे हैं. सर दिल्ली हाँ. दिल्ली एनसीआर में मॉनसून हिट कर गया. Yes. So like some electricity pillar has gone, fallen down on another electricity pillar.
ओह My God. Yeah, so it may take longer time. सर, ये तो बम बम फट गया होगा, रात को नींद खुल गई होगी। हाँ पहले होते थे ये, बहुत टाइम वो बात सुना है, आज ये हो रहा है। Yeah, welcome to Gurgaon. मैं बैठा हुआ कह रहा होगा यार, ये तो इंडिया में ही हो सकता है। ये तो गर्मी गर्मी तो बहुत होगी, मतलब बिना एसी के प्रॉब्लम नहीं हो रही। अरे Yeah, नहीं, luckily weather is good, nice today. अच्छा, ओके। Luckily, it's good. इट्स बीन Monsoon. रेनिंग सिंस 9 आवर्स नाउ। Hmm. रात को 3 बजे देखी थी मैंने, बारिश स्टार्ट हुई थी। Hmm. Hmm. So, इलेक्ट्रिसिटी तो सर आप भी रहे हो इतने साल, मुझे नहीं लगता। आई डोंट नो, मैंने 3 महीने आज तक तो नहीं देखी अभी तक कोई इलेक्ट्रिसिटी कट होता हो यहाँ। no. यूएस में भी नहीं होता होगा जब आपके वहाँ No. पे। No. इनफैक्ट यहाँ पे आई डोंट नो क्या सिस्टम है, क्यों करते हैं। कनाडा के अंदर रूल है, कोई भी स्टोर, कोई भी ऑफिस, कितना बड़ा शोरूम होगा, एक लाइट बंद नहीं करेंगे रात को अगर जाएंगे। What? क्या? Sorry. एक भी लाइट बंद नहीं होती। अगर कोई शोरूम है, जैसे मेरे Hmm. घर के सामने एलसीवीओ है। Hmm. एलसीवीओ लिकर शॉप बहुत Hmm. बड़ी है, मतलब Hmm. शोरूम टाइप है। Hmm. तो एक भी लाइट, डिस्प्ले की भी लाइट, एक भी लाइट बंद नहीं करते। इनका रूल है, 24/7. 24/7 चलता है। Hmm. सामने टीडी बैंक है, सोशिया बैंक है। तो मैंने किसी से पूछा, कहते कि यहाँ पे रूल है कि आप रात को बंद नहीं कर सकते, कि थेफ्ट को लेके बड़े ज्यादा सिक्योरिटी Hmm. रीजन है। Hmm. तो मैं पूरी टीवी रात ऐसा लगता है कि स्टोर शायद खुला हुआ है, Hmm. बट वो होता बंद है एक्चुअल में। वो अंदर एक एक चीज दिख रही होती है, उनके काउंटर सारे के सारे डिस्प्ले एवरीथिंग। all bottles. बंद ही नहीं करते। ग्रोसरी स्टोर, क्लोथिंग Hmm. के स्टोर कुछ नहीं बंद होते, लाइट्स नहीं बंद होती। और Hmm. ट्रांसपेरेंट है, सब दिखता, सब कुछ है। Hmm. Hmm. Yeah, but they do a lot of wastage, I believe. Like बहुत बहुत ज्यादा, how much बहुत poly ज्यादा। bag they waste, how much water they waste, how much electricity they waste. हाँ, They have no यूएस sense एंड of कनाडा। wastage. Sometime I believe. बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। Mm. Like there are some country where like the resources are so less because like US and Canada they are abundant of resources. So राइट। that is the one of the पानी की major कमी reason. नहीं है Mm. और That. इलेक्ट्रिसिटी की कमी नहीं है, तो ये लोग Mm. तो बिल भी Mm. ज्यादा नहीं आते, मतलब Yes, very normal. अब बहुत ही नॉमिनल बिल आते हैं। Mm. मतलब Mm. एक यही चीज है जो सस्ती है, तो No, but 100 petrol डॉलर is gas is also यूटिलिटी cheap. का। हाँ, नहीं वो सर, भी बहुत सस्ता है। हाँ, गैस gas तो is also महंगा नहीं cheap. हो गया? अब यूएस में आ रहा No, था, बहुत महंगा हो गया है। no. यहाँ के हिसाब से, मतलब बेसिकली यहाँ की सैलरीज के अगर ले लो, जो आपका अर्निंग है हम्म। उसके प्रोपोर्शनेट अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा, ज्यादा चीप है। No, मतलब otherwise यूटिलिटीज, also what is per gallon you are paying? सर मुझे नहीं आइडिया अभी, मैंने तो अभी Hmm. लाइसेंस ही So नहीं when I was in लिया US, मैंने। I used to pay $2 a gallon. That means like how much? 160 rupees. 160 रुपीज। हाँ। 160 rupees of today, but that time it was like in 70. So 140 rupees for almost 4 liter, 3.67 liter. हम्म। So petrol, ओके gas is much cheaper and good quality. ओके Cars are ओके। also being comparatively cheap. हाँ, कार्स तो चीप है ही सर। Hmm. कार्स भी चीप है, आगे कई कई चीजें मतलब बहुत नॉमिनल है। अभी मैं Hmm. 50 Clothes इंचेस are का टीवी also, लेके आया हूँ। clothes are also comparatively good quality and less expense. वो यूएस में ज्यादा है सर, यूएस में तो बहुत ही चीप है, कनाडा Hmm. में इम्पोर्ट होता है वहां से तो महंगा है। Okay, बट okay. यदि हमें यूटिलिटीज का बिल आया मेरा अभी, Hmm. तो सेंट्रली हीटिंग सिस्टम है, एसी सिस्टम है, सब कुछ है। हाइड्रो मिला के, हाइड्रो मतलब पानी वानी सब कुछ मिला के $120, जो कि यहाँ का स्टैंडर्ड है हर घर का। 100, Hmm. 125, 150, $200। तो Hmm. मतलब $100 तो यहाँ के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, Nothing. Very true. Canadian dollar, it's almost 55 और rupees, सस्ता है। 60 rupees. अभी 61 चल रहा है, 61, साढ़े Hmm. बट तो इट्स 61.5। वेरी चीप यार। Hmm. ये चीज बड़ी सस्ती है। Hmm. बट अदर अदर स्टफ देख लो तो वो बहुत महंगा, मतलब बेसिक Good छोटी thing सी is चीजें आप air लेते quality हो। index, like we are living in 400, they are living in 25.
अभी 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 की देखता हूँ क्या है। बट वो तो तो यहाँ पे अभी 10 तो से ऊपर पुअर लिखा आ जाता है कि पुअर है। नहीं, बट अभी तो वहां पे बुरा हाल चल रहा है ना, वाइल्ड फायर्स की वजह से हाँ, पूरा उसी वजह ऑरेंज हो से गया। उसी की वजह से लिखा आता है कि पुअर क्वालिटी। What is the air quality index today? देखा उसमें हमारा नहीं नहीं, हमारा तो सबको पता है। कनाडा का। सर इस पे तो सेंसर इंस्टा। 22 है। हाँ, हाँ 22? हमारा 22 70 है। है सर। ओ वाह, काफी Lucky. आसपास है हम लोग। Lucky, yeah. Good. Chalo, ठीक है. Come back to this four column bank reconciliation. Yeah. Just remember this three terminology, because in question you can see any of these three terminology. So, but the crux of the story would be four column bank reconciliation that question is asking to you. So first it can be, like they may ask you reconciliation of cash receipt and disbursement. They can ask you proof of cash, and they can ask you proof of proper recording of cash transaction. It's called four column bank reconciliation. So there's an example for it. Reconciliation of cash receipt and cash disbursement for the month of December. So here you need to do like from opening balance, what all receipt you have during the year, what all payments you have during the year, and what is the closing balance, how this closing balance is being arrived. Basically the movement is called four column reconciliation. If you see in this example, bank balance as per book, in the opening it is 12,550. And during the year, they have received check from the customer of 285. NSF mean? What is NSF mean? Non-sufficient fund. Non-sufficient fund. Check received from customer that you need to reduce, right? And then next one is bank service charges. From where do you adjust bank service charges? From the payment. And the last one is if there is any error on check number 350, which is $54. I think. Right. On the other side, if you see bank balance as per bank record, here you have seen the bank balance as per book records, and you have done the reconciliation. Now here you are doing bank balance balance as per bank record. I think this question, yeah, is in continuation of this one. So what I can do, okay, got this question. So same example we are using for 4-section bank reconciliation. 1 second, let me do small adjustment in the notes. Okay, so this is actually same example which we did over here. So in this question, if you remember this illustration, a company book balance is this and the cash balance is this, bank charges, non-sufficient fund, and the deposit in transit, outstanding checks, and all these things. So this same example we are extending into the 4 column. So your bank balance as per bank record is $10,050, right, at the beginning, and then $3,000 you have check deposited, deposit in transit $3,000, right? So that you will be adjusting here from the opening bank, and which will come into the adjustment to the receipt during the year. And then outstanding check you have $4,000, and in the beginning you will be adjusting. Let me copy paste this again here for you. Same illustration. So that we can directly correlate from here. So now if you see first box, your balance as per book
1250. Yeah, so adjusted true balances for book is 12,550. Okay, and then you have non-sufficient fund of 285. I think I missed something here. Plus 285. Okay, I need to add this illustration. Maybe allow me some time. So after the like when I send you the notes, I'll add proper illustration here. Okay, sir. I think I missed to add the facts over here. Okay. Sorry, I'll add the facts and Yeah. maybe we can discuss this illustration later on. But like the format of the illustration is generally like this: opening balances, then what all receipts you have during the year, what all payments you have, and how you arrive at the closing balances of the respective books. And then what are the adjustments required in the receipt side, what are the adjustments required in the payment side to reach at the true balance. Basically, the whole objective is to reaching at the true balances, both side, from book to bank or bank to book side. Same way how we did like simple bank reconciliation. Cool. Maybe we can take a break and then we can start the new topic, trade receivable. Right? Shall we take a 15-minute break? Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. So it's 12:15. We can come back at 12:30. Will that be fine? Yes, sir. Done. Okay. Gurmeher? Yes, sir. Yes, sir. Let's come back at 12:30.